So in the previous session, we have started our pharmacology, that is a drug acting on ANS. In the last lecture, we have seen this part, drug acting on ANS. We have started with this, and in the last lecture, we have seen what do you mean by autonomic nervous system, what are the parts of autonomic nervous system. Basically, ANS is divided into three parts. Okay, ANS में three parts होते हैं. Okay, ANS में three parts. So first one is known as sympathetic nervous system. Second one is a okay, parasympathetic nervous system, and third one is a enteric nervous system. Enteric nervous system. So we have seen the nervous system in this. The nervous system basically nervous system is divided into two parts. First part is a CNS. CNS means central nervous system. In that you are going to have brain and spinal cord, known as the central nervous system. In the second one, known as the peripheral nervous system. So in that autonomic and somatic nerves are there. So these are the nerve fibers. Somatic means under voluntary control. So you can control the movements of organs which are supplied by somatic nervous system, but you cannot control the activity of organs which are supplied by or which are innervated by autonomic nervous system. So, and in the autonomic nervous system, again, first one is known as craniosacral outflow, which is known as a parasympathetic nervous system, and thoracolumbar outflow, which is known as a sympathetic nervous system. Physiologically, they are known as sympathetic and parasympathetic nervous system. So, most of the actions of these two nervous systems, sympathetic and parasympathetic, they are the of opposite type. Say, for example, in the sympathetic nervous system, you have a neurotransmitter, post-ganglionic neurotransmitter. Most of the time, neurotransmitter post-ganglionic is your noradrenaline, but sometimes it may be either dopamine, it may be either adrenaline, और it may be either acetylcholine. नॉर्मली क्या होता है कि जो कोलिनर्जिक सिस्टम होता है एसिटिलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर जिसका होता है दैट इज नोन एज अ craniosacral outflow and physiologically it is known as a parasympathetic nervous system. Okay? And in this nervous system as the autonomic nerve fibers जो होते हैं they they form say synapse or okay, known as a ganglia. They form say synapse known as a ganglia. Okay. Now presynaptic, that's why there is a presynaptic nerve fiber known as a presynaptic neuron and postsynaptic neuron. Right. Now the difference between these two systems is only in the neurotransmitter. Now in case of parasympathetic nervous system, preganglionic neurotransmitter as well as postganglionic neurotransmitter is nothing but the acetylcholine. तो दोनों जगह पे पैरासिम्पेथिक नर्वस सिस्टम में एसिटिलकोलिन ही होता है. Okay? Now in case of sympathetic nervous system, so preganglionic neurotransmitter or preganglionic neurohormone is nothing but the acetylcholine. But for postganglionic fiber, most of the time it is a noradrenaline. But for example, at the kidney and at the mesenteric system, so there you will have dopamine as a neurotransmitter. Postsynaptic neurotransmitter is a dopamine, and at some instant, for example, sweat glands. So in the sweat gland, you are having acetylcholine again as a postganglionic adrenergic neurotransmitter. तो अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है आपको. पैरासिम्पेथिक मतलब क्या है कि प्री सिनेप्टिक एज वेल एज पोस्ट सिनेप्टिक दोनों में क्या है एसिटिलकोलिन है. ठीक है. एड्रेनर्जिक मतलब क्या है कि एड्रेनर्जिक में प्री सिनेप्टिक एसिटिलकोलिन ही है. पोस्ट सिनेप्टिक क्या होता है नॉर एड्रेनलिन, लेकिन वो भी सभी तरफ नहीं होता, वो सभी जगह पे नॉर एड्रेनलिन नहीं होगा, मोस्ट ऑफ द जगह पे होगा. ओके. से फॉर एग्जांपल 90% post ganglionic sympathetic fibers they are neurotransmitter having your noradrenaline, उसमें noradrenaline ही होता है. But there are certain examples, there are few examples. For example, in the kidney, in the mesentery, so you will have dopamine as a post synaptic adrenergic neurotransmitter. And in the sweat gland, again in the sweat gland you have acetylcholine. So जो sympathetic nervous system का फाइबर है स्वेट ग्लैंड के लिए, तो वहाँ पे दोनों भी प्री एज वेल एज पोस्ट गैंग्लियोनिक क्या है एसिटिलकोलिन है. जहाँ पे रिनल है किडनी
और मेसेंट्री, वहाँ पे प्री गैंग्लियोनिक एसिटिलकोलिन है, पोस्ट गैंग्लियोनिक डोपामाइन है, एंड बाकी जितने भी जगह है उसमें प्री गैंग्लियोनिक आपका एसिटिलकोलिन है, पोस्ट गैंग्लियोनिक नॉरएड्रेनालिन है, ठीक है। नाउ फार्माकोलॉजिकली they are known as either adrenergic nervous system and cholinergic nervous system. Adrenergic nervous system and cholinergic nervous system. Cranio craniosacral outflow is known as a cholinergic system. लेकिन यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा गलत किया है, बुक में रेफरेंस बुक है लेकिन उसमें भी गलत किया है. So craniosacral outflow is known as a cholinergic nervous system, also known as a parasympathetic nervous system, and thoracolumbar outflow is known as a adrenergic nervous system or sympathetic nervous system. We have seen this nervous system. I have already completed one session on this. So I have told you the classification of neurotransmitter, their function, depending upon their chemical nature, they are classified. Depending upon their location, they are classified. Depending upon their functions, they are classified. Some are inhibitory neurotransmitters, some are the excitatory neurotransmitters. Some are located in the nerve centrally in the nervous system. Some are located in the periphery of nervous system. Central neurotransmitter, peripheral neurotransmitter. Some neurotransmitters are amine in nature, some are amino acid in nature, some are peptide in nature. Okay, so depending on that they are classified. Okay, so we have seen that. Now we have also seen what are the actions of sympathetic nervous system. Sympathetic nervous system will prepare you for either fight or flight. So according to that, the neurotransmitter noradrenaline will be released upon threat, and that noradrenaline will produce certain changes in your body so that your body will cope up with the situation. Either your body need to fight with the threat or your body need to flight from that threat. So for the both actions, you need a certain changes in your body. So that changes are nothing but the, for example, pupil dilation of pupil will be there. Then all kind of secretions they are inhibited. So जब आप लड़ रहे होते हो तो आपके salivary secretion नहीं होगा. So mucous secretion also inhibited. Okay, skeletal blood vessel will be dilated, vasodilation. Then your heart rate and force of contraction will be increased. That is known as a positive inotropic and positive chronotropic effect. Positive inotropic and positive chronotropic. Positive inotropic means what? Increase in the force of contraction. And positive chronotropic means increase in the rate of heart rate increase over the chronotropic. Inotropic मतलब force of contraction. Okay. Now coronary arteries blood vessel will also be dilated because your heart need more work, so it need more blood. So for that coronary vasodilation. Bronchodilation will be there क्योंकि आप जब लड़ रहे होते हैं, जब आप भाग रहे होते हैं तो आपका सांस फूलता है. Bronchodilation. In the stomach, during the fight, during the threat, during the running, you will never feel for hungry. So your stomach secretions will be inhibited, then peristalsis will be decreased. Okay. In the liver, you need a more energy to run to fight. So glucose will be converted. Okay. So glucose conversion will be increased. So glycogen is broken down into glucose. So glycogenolysis will be there. In the spleen, also secretions are reduced. In the adrenal gland, more secretion of noradrenaline. In the large intestine, small intestine, again decreased peristalsis. Kidney में क्या effect होगा? It will decrease the urine formation. Urine formation will be decreased, and there is a relaxation of detrusor muscle of your bladder. Bladder जो होता है इसके साइड में जो मसल थे, smooth muscle, they are known as detrusor muscles, and this is known as a sphincter. ओके, अगर डेट्रोसर मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, स्फिंक्टर रिलैक्स होता है, इसका मतलब यूरिन क्या कहा जाएगा, बाहर जाएगा. डेट्रोसर मसल जब रिलैक्स होता है और स्फिंक्टर जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसका मतलब होता है यूरिन यहाँ पे रह जाएगा. सो व्हाट एड्रेनालिन विल डू, नॉरएड्रेनालिन विल डू, इट विल रिलैक्स योर ब्लैडर मसल्स एंड कंस्ट्रिक्ट द स्फिंक्टर मसल सो दैट यूरिन विल बी रिटेन ओवर देयर. जब आप भाग रहे हो, जब आप टाइगर के साथ में लड़ रहे हो, you will never feel for urination. In the kidney, decreased urine formation, bladder will be relaxed, sphincters will be closed. And on gonadal organs,
So in the males and female, increased glandular secretion, and in the males there is ejaculation during the sympathetic nervous system. What was the effect of parasympathetic nervous system we have seen? It is exactly opposite to that of the adrenergic nervous system. So adrenergic nervous system, cholinergic nervous system, they works in the opposite way, right? So cholinergic nervous system is a stimulatory in nature, and adrenergic nervous system is inhibitory in nature. तो आप बोलेंगे सर अलग, एक्सेप्ट हार्ट, हार्ट के ऊपर कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम सप्रेशन करता है, एडरेनर्जिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेशन करता है, बाकी जगह देख लो सब रिलैक्सेशन रिलैक्सेशन होता है. सो एडरेनर्जिक नर्वस सिस्टम इज नॉट अ स्टिमुलेटरी, इट इज इनहिबिटरी. कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम इज अ कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम इज अ कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम इज अ stimulatory in nature. Adrenergic nervous system is a inhibitory in nature. You have to remember. Okay. Am I audible to you? Okay. So what will be the effect of cholinergic system on the eyes? So it will cause contraction of radial muscle, so contraction of circular muscle of your iris. It will be constricted. जो सर्कुलर मसल होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा, पिपिल का साइज जो है ना वो कम होगा, उसको बोलेंगे अपन मायोसिस. एंड दूसरा जो होता है आपका, okay, radial muscles will be contracted so that vision will be accommodated. Okay, vision आप accommodate कर सकते हो. That's why meiosis. Okay, meiosis. But actually adrenaline क्या करता था, noradrenaline, it was causing mydriasis. Okay? So in the lacrimal glands, what will be the effect of acetylcholine? So all kind of secretions will be increased. So secretion of salivary gland, they will be increased. All glands, lacrimal glands आप increase हो जाएगी. What is the action of acetylcholine on heart? So heart के ऊपर क्या करेगा? As I told you, sympathetic parasympathetic nervous system is stimulatory in nature, but except on heart. तो heart को क्या करता है? Suppress करता है. So it will decrease the heart rate and force of contraction. So opposite to that of the adrenaline and noradrenaline. So here negative inotropic effect and negative chronotropic effect is there. Okay? And negative dromotropic effect is also there. So inotropic effect, chronotropic effect, and dromotropic. Okay? Inotropic. Ino means okay. Ino means for force of contraction. Chrono means for rate of heart rate. Chrono is for heart rate. Positive inotropic means increase the force of contraction. Negative inotropic means decrease the force of contraction. Positive chronotropic means increase the heart rate. Negative chronotropic means decrease the heart rate. There is one more known as dromotropic. DROMOTROPOIC. Dromotropic means it is a function on conduction system of heart. So those drug which has a positive dromotropic effect means क्या कि कोई ड्रग अगर पॉजिटिव ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट दिखाता है उसका मतलब क्या कि वो कंडक्शन सिस्टम जो है हार्ट का उसके ऊपर ज्यादा कंडक्शन करेगा, एंड जो निगेटिव ड्रोमोट्रोपिक दिखाता है वो कंडक्शन सप्रेस करेगा. ओके, तो जो पॉजिटिव आइनोट्रोपिक है वो फोर्स ऑफ कंडक्शन बढ़ाएगा, जो नेगेटिव आइनोट्रोपिक है वो फोर्स ऑफ कंडक्शन कम करेगा, जो पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक है वो हार्ट रेट बढ़ाएगा, जो नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक है वो हार्ट रेट कम करेगा. ओके, so that's all. Then in the bronchial smooth muscle, so adrenaline, noradrenaline was doing bronchodilation, so it was bronchoconstriction. स्टमक में भी क्या है, secretion वगैरह सब बढ़ जाएंगे, gastric acidity will be increased. Okay, in the stomach you have two kind of receptor, M1 receptor is there, M1, okay, and M1 and M3 muscarinic receptor. So we'll see it about the what are the different types of receptor and all that. But just understand the actions are again in the liver and gallbladder, so secretions will be increased. In the kidney, urine secretion will be increased. In the intestine, peristalsis will be increased. Digestion will be there. So in the intestine, so the smooth muscles of intestine they are contracted by acetylcholine and sphincters are relaxed. ये देखो, ये जो इंटेस्टाइन होता है आपका उसमें स्मूथ मसल्स होते हैं पैचेस, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ. So these are the smooth muscles. Okay, these are the smooth muscles. Sometimes at a particular distance they are the sphincters. So sphincters will be. So what acetylcholine will do? Suppose आपने खाना खाया है, ये खाना है ना खाया, so intestine में आया है. Suppose food bolus is here.
bolus is over here. So what will acetylcholine do? What is the role of acetylcholine? So you know that acetylcholine will increase the peristalsis. So how it will increase the peristalsis? So it causes the constriction of your smooth muscle of GIT. स्मूथ मसल्स है उसका कंस्ट्रक्शन करेगा, रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल ऑफ जीआईटी. ये बोलस क्या होगा, धीरे धीरे आगे 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 due to contraction and relaxation, rhythmic contraction and relaxation due to that. Okay. And what is this? This is sphincter. So sphincters will be relaxed. Sphincters relax होगा मतलब यहाँ से बोलस नीचे जाएगा. Right. So there is an increased peristalsis by acetylcholine. That's why. Now, adrenaline, what will do? Adrenaline will cause relaxation of smooth muscle and constriction of sphincter. So what will happen after that? This bolus will remain in its place. It will not move. जो खाना खाया आपने वो एक ही जगह पे रहेगा, मूव नहीं होगा. Under the influence of noradrenaline, okay, in the GIT. Under the influence of acetylcholine, so as there is a rhythmic contraction of smooth muscles and relaxation of your sphincter, so bolus will move ahead, and that is known as a peristalsis. Okay, that is known as a peristalsis. Okay, so that's why. So adrenergic drug क्या करेगा? Okay, cholinergic drug क्या करेगा? Okay, so वो एक समझ में आना चाहिए. So on the urinary bladder again, what is the effect? So smooth muscles of your bladder are contracted and sphincter is relaxed. अगर मान लीजिए इसमें यूरिन है, थैली है, ये पूरा यूरिन है, इसमें मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, यूरिन नीचे आएगा और ये रिलैक्स होगा तो यूरिन पास कर सकते हो. अगर मसल रिलैक्स हो गए, detrusor muscle of your bladder, if they are relaxed and if sphincters are constricted, that means urine is retained in the bladder. If detrusor muscles are contracted and this sphincter is relaxed, that means urine is passing through bladder. Okay, so here acetylcholine contract the smooth muscles of bladder, that is detrusor muscles, and relaxes the sphincter. It causes the urine, it helps to pass the urine. So urination will be there. On gonadal organs, so what happens? In the male there is erection, the female variable actions are there depending upon the posterior cycle or menstrual cycle. How to understand the adrenergic cholinergic drug? It is very simple. So what acetylcholine do on eyes? What is the role of acetylcholine on eyes? Acetylcholine अगर रिलीज हो गया तो eyes पे क्या करेगा? It will contract the pupil. It will constrict the circular muscles of your iris. Okay, there is a radial muscles of your iris, and it will relax the. Okay, it will constrict the radial muscles of iris. What will happen? There is a pinpoint pupil. Okay, and also contract the sphincter pupillae. So because of that constriction, so what happens? So you are able to accommodate the vision for near distance. अभी देखो ये एसिटिलकोलिन क्या करता है, आपको सिंपल लैंग्वेज में मायोसिस करता है, पिन पॉइंट पिपिल है ना, पिपिल कंस्ट्रिक्शन. अभी देखो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग क्या करेगा, एसिटिलकोलिन क्या करता है, इसका पिन पॉइंट पिपिल करता है या फिर मायोसिस करता है. तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग क्या करेगा, ऑब्वियसली ये एक्शन ब्लॉक करेगा और माइट्रेसिस करेगा. That's why anticholinergic drugs they are used as a mydriatic. Okay. For example, glands के ऊपर क्या एक्शन है acetylcholine का? So acetylcholine will increase all kind of secretion by acting on a hormone receptor. उसके receptor क्या है अपन देखेंगे बाद में. But by acting on a hormone receptor, it will increase all kind of secretion. So what anticholinergic drug will do? So obviously it will prevent the secretion. So अगर एसिटिलकोलिन अगर सलाइवा का सिक्रेशन बढ़ाता है तो जो एट्रोपिन वगैरह एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है वो क्या करेंगे, सो दे विल डिक्रीज द सलाइवरी सिक्रेशन, दैट मींस दे विल कॉज ड्राइनेस ऑफ माउथ. दैट्स व्हाई मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ एट्रोपिन इज द ड्राइनेस ऑफ, उसका रीजन है. सो अंडरस्टैंड द कांसेप्ट फर्स्ट एंड देन यू विल एबल टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म आल्सो, एडवर्स इफेक्ट आल्सो. देयर इज नो नीड टू रिमेंबर द एडवर्स इफेक्ट. So salivary secretion is increased by acetylcholine. So anticholinergic drugs will cause dryness of mouth. Okay. So in the GIT, stomach and GIT, what acetylcholine does? Acetylcholine increases the peristalsis and secretions of GIT fluid. So what anticholinergic drug will do? So anticholinergic drug will cause decrease in the peristalsis and decrease in the secretion.
पेरिस्टालसिस इंक्रीज हो गया मतलब डाइजेशन चालू है, पेरिस्टालसिस चालू है, आप है ना, पेरिस्टालसिस कम हो गया मतलब क्या, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा. दैट्स व्हाई एंटीकोलिनर्जिक ड्रग कॉजेज द कॉन्स्टिपेशन, दैट इज द एडवर्स इफेक्ट. ओके, दे कॉजेज द डिक्रीज इन द एसिड फॉर्मेशन. इससे होता है pyranozapine, propantheline, atropine. So they will decrease the acid formation. They will cause mydriasis. They will they will cause dryness of mouth. They will cause constipation. है ना, जैसे एसिटिलकोलिन का यूज, एसिटिलकोलिन का रोल क्या है इन द किडनी, इन द ब्लैडर, इन द किडनी इट विल इंक्रीज द यूरिन फॉर्मेशन. एसिटिलकोलिन will increase the urine formation in the kidney. एंटीकोलिनर्जिक क्या करेंगे, they will decrease the urine formation. एंटीकोलिनर्जिक डिक्रीज करेंगे. एसिटिलकोलिन on the bladder क्या है इसका रोल, so it will constrict the these muscles of bladder and relaxes the sphincter so that your body will able to pass the urine. तो anticholinergic drug क्या करेगा, so anticholinergic drug will do opposite thing, it will block the action of acetylcholine, it will cause urine retention. Yeah, simple होता है, you know these things. Are you getting my voice properly? We have seen this also. Remember, in the peripheral nervous system you have to type somatic nervous system. In the somatic nervous system the neurotransmitter is again acetylcholine at the neuromuscular junction. Okay, neuron, nerve plus muscle, neuromuscular junction. At the neuromuscular junction acetylcholine is the neurotransmitter. Okay, now in the autonomic nervous system, parasympathetic nervous system, okay, the preganglionic neurotransmitter is acetylcholine and postganglionic neurotransmitter is also acetylcholine. Okay, but in case of sympathetic nervous system or adrenergic nervous system, so preganglionic neurotransmitter is acetylcholine again, but postganglionic is a postganglionic is a noradrenaline majorly. Okay, sometimes preganglionic is always acetylcholine, sometimes it may be acetylcholine postganglionic. For example, in case of sweat glands. Okay, in case of adrenal medulla preganglionic is acetylcholine again, but postganglionic is a adrenaline. Okay, sometimes dopamine is also there, for example in case of kidney and mesentery. So आपको याद यही रखना है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में प्री गैंग्लियोनिक एसिटिलकोलिन ही होगा, बट पोस्ट गैंग्लियोनिक मोस्टली नॉर एड्रेनलिन होगा. बट ये कंपलसरी नहीं, कुछ कुछ जगह पे क्या है, sometimes at some places for example kidney and mesentery dopamine is there. Okay, in case of your sweat gland acetylcholine is there, in case of your adrenal gland adrenaline is there. Okay, but in the parasympathetic nervous system pre as well as post ganglionic neurotransmitter is acetylcholine. Okay, we have already seen this, now we'll see it. So actually this part I will take again when we'll discuss the cholinergic system, but at the beginning you should know this. So autonomic nervous system, they are divided into somatic nervous system which is under voluntary control and autonomic nervous system which is not under voluntary control. So your autonomic nervous system, it is under, it is classified into two types, that is somatic and autonomic. Somatic means it is under voluntary control and autonomic means it is not under voluntary control. So it has some degree of autonomy. And autonomic nervous system is divided into two parts. Parasympathetic nervous system, which prepares you or your body for conservation of energy. For conservation of energy, it is known as a cholinergic or parasympathetic system. Because it is known as a cholinergic, why? Because acetylcholine is the neurotransmitter, pre as well as at a post ganglionic fiber, known as a cholinergic, right? And second one is the sympathetic nervous system, also known as the adrenergic, and which prepare you for either fight or flight. Okay? So in the sympathetic nervous system, post-ganglionic neurotransmitter, majorly it is a noradrenaline. Sometimes it may be dopamine, sometimes it may be acetylcholine, sometimes it may be adrenaline, depending on the uh, depending on the locations. Okay? Now, different neurotransmitters, their synthesis and metabolism. This part is very very important. बहुत ही ज़्यादा important part होता है ये. And different neurotransmitters, their synthesis, storage, release and metabolism. Because if you know how these neurotransmitters they are synthesized, how they are stored,
how they are released. Okay, so you can modify the action of that neurotransmitter, है ना, कि अगर आपको एसिटिलकोलिन के एक्शन चाहिए, you want actions of acetylcholine, so how you can increase? You can increase its formation, you can increase storage, you can increase its release, you can prevent the metabolism. अगर आपको एसिटिलकोलिन का डेफिशिएंसी है तो आपको उसको बढ़ाना है कोई भी कंडीशन में, कैसे करेंगे आप? एक तो उसका सिंथेसिस बढ़ा दो बॉडी में, अगर सिंथेसिस नहीं बढ़ा सकते क्या है ऑप्शन दूसरा, है ना, उसका रिलीज बढ़ा दो, रिलीज नहीं बढ़ा सकते तो क्या है, रिलीज होने के बाद में जो मेटाबलाइज हो रहा है तो मेटाबॉलिज्म करने वाले जो एंजाइम है उनको ब्लॉक करो ताकि जो रिलीज हो रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर रहे, है ना. यू कैन मॉडिफाई द एक्शंस इफ यू नो हाउ दे आर सिंथेसाइज्ड, हाउ दे आर स्टोर्ड, हाउ दे आर रिलीज्ड, राइट. So you can modify. If you once you understand this, you are going to understand the whole chapter. Okay? So first we'll see how acetylcholine is synthesized, it is stored, and it is released from the neurons or synapse. Okay. So acetylcholine. Now acetylcholine, as the name indicates, it will have two parts. Acetyl is there one, and second one is a choline part. So acetyl means acetyl group. So it comes from acetyl CoA, and choline is the nitrogenous base. तो ये choline nitrogenous base होता है acetyl group side. It is synthesized in the nerve fiber locally from the choline. What is choline? Choline is a nitrogenous base which is present in the extracellular fluid. Extracellular fluid में ये choline होता है from extracellular fluid, and acetyl group from acetyl CoA by the enzyme choline acetyl transferase. तो acetyl सिंथेसिस और इसको और भी बोलते हैं choline acetyl transferase. सेम एंजाइम इज आल्सो नोन एज acetyl सिंथेस. इसको सिंथेटाइज भी बोलेंगे या फिर इसको अपन choline acetyl transferase भी बोलते हैं. Now it is synthesized in the nerve fiber from choline and acetyl group by the enzyme choline acetyl transferase. Okay. Now the rate limiting step. Rate limiting step क्या होता है मालूम है आपको? Anybody? What do you mean by rate limiting step? Yes, anybody? It is known as the slowest step in the particular reaction, the rate limiting, or in this case, in the synthesis of acetylcholine, rate limiting step कौन सा होता है? The uptake of choline from extracellular fluid to the neuron. ये सब कार्यक्रम कहाँ पे चल रहा है? सिंथेसिस का न्यूरॉन में चल रहा है, ठीक है. तो एसिटिलकोलिन न्यूरॉन में हो रहा है, नर्व एंडिंग में. बट कोलिन कहाँ पे है? कोलिन नर्व एंडिंग में नहीं है. कहाँ पे है? एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, मतलब प्लाज्मा में या इंटरसेलुलर फ्लूइड में, है ना. सो वहां से उसको लेके जाना पड़ेगा ना न्यूरॉन में. दैट इज नोन एज द अपटेक ऑफ कोलिन. सो रेट लिमिटिंग स्टेप इन द synthesis of acetylcholine, I am repeating, rate limiting step in the synthesis of acetylcholine is nothing but the uptake of choline from extracellular fluid. क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर आता है. There are certain drugs which affect the synthesis, storage, and release of acetylcholine. Now, acetylcholine is synthesized, it is stored in the synaptic vesicle, and it is released upon signal. Signal किसका? From the pre-ganglionic nerve. So, if there is a signal or if there is a depolarization from the pre-ganglionic nerve, so that nerve is stimulated, and after the stimulus, so there is a increase in the calcium level in the synaptic vesicle. तो synapse में क्या होता है? Vesicle होता है. I already told you. So small vesicles are there. So once there is a signal, once there is a stimulus, so that stimulus causes increase in the calcium level in the synaptic vesicle. और जब कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है, so calcium bring about the exocytosis of the neurotransmitter. Exocytosis क्वेश्चन दो बार आ चुका है. Neurotransmitters are released by the process of, कौन सा प्रोसेस है भाई? Exocytosis. Neurotransmitters they are released by the process of exocytosis. आपको इतना छोटा छोटा बोलता हूँ मैं, बाद में एग्जाम में ये गलत कर देता हूँ, राइट. सो रिमेंबर, rate limiting step in the synthesis of acetylcholine is nothing but the uptake of choline from extracellular fluid to the neuron. Okay, that is a rate limiting step. Okay, now it is synthesized, it is stored, and it is released. Released upon what? Released upon signal. Signal जब आएगा तब release होगा. कैसे होगा? So that stimulus when comes, there is an increase in the level of calcium in the synaptic vesicles.
वैसे क्या कैल्शियम लेवल बढ़ जाएगा. Calcium will bring about the exocytosis of the neurotransmitter. So calcium उसको exocytosis process से release कर देगा. Right? Now after release, it will act on its post-synaptic receptor. Post-synaptic receptor कौन से होंगे? acetylcholine के लिए NM and NN. NM and NN. NM को बोलेंगे अपन. There are two receptors of this acetylcholine. N, N, N. Simply ये याद रखो muscarinic receptor होते हैं and nicotinic receptor होते हैं. So it will act on a post-synaptic receptor like muscarinic and nicotinic, and then what will happen? It will do its action. Remember, neurotransmitter is released by exocytosis process. Exocytosis, it will act on a post-synaptic receptor. Some part of the released neurotransmitter will be reuptaken into the presynaptic vesicle. ना उसमें उसको बोलते हैं presynaptic receptors. Presynaptic receptor उसमें भी stimulative होता है, inhibitor होता है. Now they are also known as the autoreceptor or regulatory receptor. They regulate the release of neurotransmitter. Okay. Now after release, some part of neurotransmitter will act on a post-synaptic receptor or post-synaptic neuron. Some part will be reuptaken and some part will be metabolized. So okay, this is how there is synthesis, storage and release. Okay. Now certain drugs, they interfere with the synthesis and release. So first is a hemicolonium. Hemicolonium inhibit the choline uptake, and prevent the synthesis of acetylcholine. So अगर आपको synthesis मतलब if there you are suffering from disease where there is increased acetylcholine, so what you have to do, you have to use this hemicolonium. It will do, it will prevent the synthesis of acetylcholine. क्योंकि आप में बॉडी में ज्यादा हुआ है, कम करना है तो कैसे सिंथेसिस कम करो. कम कैसे करेंगे, ज्यादा कैसे करेंगे? अगर आपको मालूम है हाउ इट इज सिंथेसाइज्ड, हाउ इट इज स्टोर्ड, हाउ इट इज रिलीज्ड. Okay, so it inhibit the synthesis of acetylcholine by preventing the reuptake of choline from extracellular fluid. Then another drug is there known as a vasemicol. Okay, vasemicol inhibit the vascular uptake of acetylcholine. मतलब जब सिंथेसाइज हो गया, स्टोर करना है वेसल में, साइनेटिक वेसिकल में, तो वो अपटेक बंद करता है vasemicol. Then third one is a botulinum toxin. It inhibit the release of acetylcholine from the synaptic vesicle. So they interfere with the synthesis, storage and release of acetylcholine. Now acetylcholine is metabolized by, acetylcholine is hydrolyzed into choline and acetic acid. इसके ऊपर भी एक बार पूछा था, what is the hydrolytic product of acetylcholine? बना किससे? choline से acetic acid. वही मतलब choline and acetylcholine है ना, acetyl plus choline, ये इसका मतलब ये इसका स्टार्टिंग मटेरियल है. तो एंड प्रोडक्ट क्या होगा? ब्रेक डाउन करने के बाद कोलिन रिलीज होगा और एसिटिल का कोई का तो वो एसिटिक एसिड बनेगा. तो एसिटिक एसिड एंड कोलिन, दे आर द हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट ऑफ प्योर एसिटिल. नाउ इट इज हाइड्रोलाइज्ड बाय एंजाइम नोन एज कोलिन एस्टरेज. Acetylcholine is metabolized by enzyme known as a choline esterase. There are two types of choline esterase. इसके ऊपर भी बुक क्वेश्चन एक दो बार आ चुके हैं. सो फर्स्ट वन इज नोन एज acetylcholine esterase. ये एंटी नहीं है. acetylcholine esterase. acetylcholine esterase. First one is acetylcholine esterase, also known as a true choline esterase. First one is the acetylcholine esterase or true choline esterase. True choline esterase क्यों बोलेंगे उसको अपन? First one is the acetylcholine esterase or true choline esterase. Acetylcholine esterase or true choline esterase. So why it is known as a true choline esterase? Because it hydrolyzes, it metabolizes only acetylcholine present in the neuron. This enzyme is present in the neuron, ganglia and myoneural junction. It hydrolyzes the acetylcholine rapidly. Quickly hydrolyze करता है इसको acetylcholine. कहाँ पे पाया जाता है? न्यूरॉन्स में, गैंग्लिया में, myoneural junction में. इसको क्या बोलेंगे अपन? ट्रू कोलिन स्ट्रेस और
acetylcholinesterase. Acetylcholinesterase or procholinesterase. Now, another enzyme is there known as a butyrylcholinesterase. Known as a butyrylcholinesterase. And this enzyme is also known as a pseudocholinesterase. इसको अपन pseudocholinesterase बोलते हैं. Now it is present in the plasma. ये कहाँ पे होता है plasma में? Liver and other organs. It hydrolyzes, it metabolizes, it breaks down the acetylcholine slowly, but it will not metabolize methacholine. आप बोलेंगे सर ये methacholine कौन है? इसके बारे में भी अपन जानेंगे. छोड़ना किसी को नहीं. Methacholine is a synthetic derivative of acetylcholine. Acetylcholine क्या है? It is a neurotransmitter for parasympathetic nervous system. You cannot use acetylcholine orally. It rapidly hydrolyzes होगा stomach में. And also some part it reaches to circulation. Blood में अगर कुछ पार्ट जाता है तो वो आप भी क्या है? Pseudocholinesterase होता है. So there is a it will not reach to a site of action. अगर आपने orally acetylcholine दे दिया, it will not reach to a site of action. Because ये पूरा उसका metabolism हो जाएगा. Right? So remember, procholinesterase, it is found in the neurons, ganglia, and myeneural junction. It metabolizes, it hydrolyzes, it breaks down the acetylcholine rapidly. Pseudocholinesterase, also known as a butyrylcholinesterase, which is present in the plasma, liver, and other organs like kidney and all. So it will hydrolyze the acetylcholine slowly, but it will not hydrolyze the methacholine. Okay? याद रखना है आपको. Are you getting or not? So how there is a synthesis, storage, and release of acetylcholine? Acetate and CoA. It is acetyl-CoA. Acetyl-CoA plus choline. Choline from extracellular fluid. So choline acetyl transferase enzyme or acetylcholine synthesis simply. So what it will happen? It will synthesize the acetylcholine. Okay? So ACH and CoA. ACH means what? Acetylcholine. This cholinesterase enzyme is enzyme responsible for the metabolism of your acetylcholine. तो ये एंजाइम जो है वो सिंथेसिस करता है कोलिन एसिटिल ट्रांसफरेज वाला. सिंथेसिस करेगा, ये क्या करेगा? मेटाबोलाइज करेगा. Synthesis of acetylcholine takes place from acetyl group and choline from extracellular fluid. Enzyme, okay, enzyme which catalyzes the formation of acetylcholine known as a choline acetyl transferase or acetylcholine synthesis. Then metabolism, acetylcholine is broken down. It is hydrolyzed into choline and acetic acid by the enzyme cholinesterase. Okay, cholinesterase. You can see over it. After synthesis, this stored, okay, acetylcholine after synthesis is stored in the synaptic vesicles. ये आप store. Upon signal, pre-synaptic neuron के through signal आ गया, तो क्या होगा? There is increased calcium level in the synaptic vesicle that causes the release of acetylcholine by the process of exocytosis. So acetylcholine will be released. It will act on its post-synaptic receptor. Post-synaptic receptor. So yeah, post-synaptic receptor. See, cholinergic receptors. It may be either, okay, it may be either nicotinic receptor NN. Mostly it is NN. है ना? ये nicotinic receptor जो होता है वो दो टाइप का होता है. N M होता है एक, N N होता है. याद भी कैसे रखना है? बहुत सिंपल. M for muscle. So it is present in the neuromuscular junction. M for क्या है? Muscle. NM receptor is present in the neuromuscular junction. M for muscle. या इससे muscle से याद आ जाए. NM is present in the neuromuscular junction. B M हो गया. ये क्या है? N. तो N मतलब क्या है? N मतलब neuron. It is present in the nervous system. NN is present in the pre-synaptic or it is present in the post-synaptic neuron. Ganglia में ये होता है. It is present in the ganglia. Metabolized by it will act on its receptor. Metabolized by cholinesterase. तो choline and acetic acid. जो choline रिलीज होगा वो फिर से अपटेक हो जाएगा न्यूरॉन्स में for more synthesis of acetylcholine. That's how it is synthesized. I will take this again when we will discuss the cholinergic drugs. Okay. So now we'll see this again. You can see over. So choline will be uptaken into the neuron. ये neuron है. इसमें choline का uptake हो जाएगा. That is a rate limiting step. ये क्या है? Rate limiting step. Rate limiting step. RL.
So rate limiting step in the synthesis of acetylcholine. If they ask you, you have to write down the uptake of choline from extracellular fluid to the neuron. That is a rate limiting step. That step is inhibited by hemicolonium. Hemicolonium. Hemicolinium. Hemicolinium is the name of drug which inhibit the uptake of choline from extracellular fluid to the neuron and prevent the synthesis of acetylcholine. Now, acetylcholine will be stored in the scientific vesicle. It is stored in the scientific vesicle. Now, the storage is inhibited by vesicol. Storage is inhibited by vesicol. After storage, it is released upon signal and it will act on its post-synthetic receptor, muscarinic. Now, this release is prevented by, or this releasing is inhibited by botulinum toxin. Botulinum toxin. That's why botulinum toxin क्या करता है? What is the use of botulinum toxin? So you know that acetylcholine is responsible for the contraction of muscle. Because मैंने बोला है कि cholinergic stim is a stimulatory in nature and adrenergic stim is a inhibitory in nature. आपको थोड़ा सा ये अपोजिट लगता है, ऐसा नहीं है. Okay? एक्सेप्ट हार्ट के ऊपर एड्रेनालिन स्टिमुलेट होता है, एसिटिलकोलिन इनहिबिट करता है, एक्सेप्ट उतना है. बाकी जगह पे नॉरएड्रेनालिन का रिलैक्सेशन फंक्शन है, एसिटिलकोलिन का कॉन्ट्रैक्शन फंक्शन है. सो कोलिनर्जिक सिस्टम इज अ स्टिमुलेटरी इन नेचर. Now this release is prevented by botulinum toxin and that's why botulinum toxin is used as a muscle relaxant. Muscle relaxant. Botulinum toxin is used as a muscle relaxant. नहीं नहीं नहीं, ये केमिकल प्रेजेंट नहीं है, ये ड्रग्स है कि आपको मालूम होना चाहिए. हेमिकोलिनियम नाम का ड्रग क्या करता है, क्या करेगा, ये कोलिन का अपटेक नहीं होने का नर्वस सिस्टम में, तो एसिटिलकोलिन बनेगा ही नहीं. अगर आपके बॉडी में ओवर एक्टिविटी ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में, आपके बॉडी में ज्यादा एक्टिविटी बढ़ रहा है किसका, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, मतलब कि आपके बॉडी में क्या है, एसिटिलकोलिन ज्यादा रिलीज हो रहा है. तो एसिटिलकोलिन ज्यादा रिलीज हो गया तो क्या होगा आपको, यू नो दैट एसिटिलकोलिन विल इंक्रीज जीआईटी पेरिस्टाल्सिस. और बहुत ज्यादा एसिटिलकोलिन होगा तो क्या होगा, डायरिया हो जाएगा ना, एब्डोमिनल क्रैम्प्स आएंगे आपको बिकॉज ऑफ द कंट्रैक्शन ऑफ योर एब्डोमिनल मसल्स. अगर एसिटिलकोलिन बहुत ज्यादा हुआ तो आपका आंखें, आपके माइट्रेसिस इतना माइट्रेसिस होगा, बस मायोसिस होगा कि आपकी आंखें खुलेंगी नहीं. अगर एसिटिलकोलिन बहुत ज्यादा हो गए तो यूरिन का क्या होगा, ऑटोमेटिकली यूरिन पास हो जाएगा आपको, है ना, चल रहे आप, कार्यक्रम होगा आपका पैंट में. सो इन द कंडीशन वेयर देयर इज अ excessive activity of cholinergic stim, so to control that you can use these drugs. So hemocolinium will inhibit the formation of acetylcholine, vasimicol inhibit the vesicular uptake of acetylcholine. Now botulinum toxin, suppose you are suffering from any neurological disease, उसमें क्या होता है कि जैसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और सेरेब्रल पाल्सी, फिर सेरेब्रल एटेक्सिया, इन दैट मसल स्पास्टिसिटी इज देयर. मसल क्या है, बहुत रिजिड हो जाता है, रिजिड मतलब फ्लेक्सिबल नहीं होता, मसल टाइट हो जाता है. सो टू रिलैक्स द मसल ऑफ दैट पेशेंट, बोटुलियम टॉक्सिन इज यूज्ड. व्हाट बोटुलियम टॉक्सिन विल डू, इट इनहिबिट द रिलीज ऑफ एसिटिलकोलिन. इनहिबिट नहीं होगा एसिटिलकोलिन तो उसके पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर के ऊपर एक्ट नहीं होगा. यू नो दैट एट अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कौन है, एसिटिलकोलिन है. सो एसिटिलकोलिन का काम क्या है वहाँ पे, इट विल कॉन्ट्रैक्ट द मसल. ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो गया मतलब क्या, स्पास्टिसिटी हुआ है, स्पास्टिसिटी. You know that acetylcholine increases the contraction of skeletal muscle. सोमैटिक नर्वस सिस्टम में क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिलकोलिन. तो ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है मसल का, स्पास्टिसिटी करता है. तो मसल रिलैक्स करने के लिए कौन यूज करते हैं, बोटुलियम. और भी ड्रग्स है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स. देयर इज वन मोर चैप्टर, सब्जेक्ट चैप्टर इज सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट. सो दिस दैट्स आर मसल रिलैक्सेंट, बोटुलियम टॉक्सिन. Now acetylcholine is metabolized by acetylcholine esterase और choline esterase. क्लियर हो गया आपको, yes or no? Now what are the receptors of acetylcholine? acetylcholine के रिसेप्टर कितने हैं, रिसेप्टर्स ऑफ acetylcholine. आपको पूछते, क्वेश्चन आता है आपको जीपैट में कि EM3 receptor is located in following organ. Cholinergic muscarinic receptor is located at which organ? देखो cholinergic receptor कितने होते हैं. So acetylcholine will act on its receptor.
एसिटिलकोलिन विल एक्ट ऑन इट्स रिसेप्टर। कितने टाइप के रिसेप्टर है बॉस इसके? दो टाइप के, निकोटिनिक रिसेप्टर एंड मस्कर्निक रिसेप्टर। अभी इनको निकोटिनिक रिसेप्टर क्यों बोला है, मतलब कुछ तो लॉजिक लगा, कुछ ना कुछ तो होगा ना। तो निकोटिनिक रिसेप्टर दे आर named because when nicotine is given to a patient from nicotina tobacco, nicotinamycin tobacco, so that alkaloid nicotine will show exactly similar action like acetylcholine, that is a contraction of skeletal muscle. निकोटीन नाम का जो अल्कलॉइड होता है टोबैको में, वो भी क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल करता है। एसिटिलकोलिन भी क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल, है ना। तो उसके बेसिस पे ये रिसेप्टर को नाम दिया है निकोटिनिक रिसेप्टर। तो निकोटिनिक रिसेप्टर इट इज फाउंड इन द स्केलेटल मसल्स एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दो टाइप का होता है, एन एन है ना, एन 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 एन, छोटा एन मतलब नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में क्या होता है, गैंग्लिया, इट इज प्रेजेंट इन द गैंग्लिया एड्रेनल मेडुला। दूसरा होता है एनएम, है ना, एनएम। एम मतलब क्या, एम मतलब मसल, कहाँ पे रहेगा ये, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। निकोटिनिक रिसेप्टर, निकोटिनिक रिसेप्टर, व्हाट आर द निकोटिनिक रिसेप्टर, दे आर नथिंग बट द आयन चैनल। ये क्या है सर, आयन चैनल रिसेप्टर। आपने देखा है टाइप्स ऑफ रिसेप्टर, वो इस में ये क्या है, आयन चैनल। निकोटिनिक रिसेप्टर दे आर आयन चैनल इन नेचर। So two types, NN, NN, NM. NN ganglia, adrenal medulla, NM neuromuscular junction. Right? Now, second is a muscarinic receptor. So what do you mean by muscarinic receptor? So again, there was one alkaloid known as a muscarine. One alkaloid was there known as a muscarine. That alkaloid produces the acetylcholine-like action. What kind of action? Decrease in the heart rate. Okay. Meiosis. Okay. Then increase the pace such like diarrhea and all that. Okay? Increase the secretion of glands. So that muscarine was showing exactly similar action as that of the stimulation of cholinergic nervous system. That's why this receptor is known as muscarine. मस्करीन क्यों बोलते हैं इसको, एक मस्करीन नाम का अल्कोलॉइड था, वो कुछ फार्माकोलॉजिकल एसिटिलकोलिन के जैसे ही एक्शन दिखाया था, तो उसको नाम दिया मस्करनिक रिसेप्टर। निकोटीन अल्कोलॉइड था, उसने स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो एसिटिलकोलिन का काम वही होता है, वैसे ही एक्शन दिखाया, उसको निकोटीनिक रिसेप्टर नाम दिया। मस्करनिक रिसेप्टर का कितना टाइप होता है, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मस्करनिक रिसेप्टर। फर्स्ट वन इज नोन एज द M1 receptor, second one is M2, M3, M4, M5. So remember they used to ask you which muscarinic receptor is present in the heart, which muscarinic receptor is present in the bronchus, okay, in the sinus, following muscarinic receptor is there. Remember M1, है ना, M1 इसको याद कैसे रखना है, सिंपल ट्रिक है इसको, वैसे तो ज़्यादा मैं ट्रिक की बिलीव नहीं करता, लेकिन आपके लिए यूजफुल है तो बोल देता हूँ। सबसे पहले आप क्या देखते हो, सबसे पहले आप देखते हो पेट पूजा। पेट पूजा मतलब पहले खाने के बारे में सोचेंगे, बाद में देखेंगे क्या करना है। पहले पेट में कुछ नहीं और जाना है, कुछ करना है, क्या करेंगे, पहले पेट पूजा। पेट में क्या होता है, पहला पहला मतलब क्या है, यमन। पहला कौन होता है, यमन। कहाँ पे है, पेट में। पेट मतलब क्या है, गैस्ट्रिक कैनिंग, जो प्रेजेंट सीन्स। उसके बाद में क्या होता है, पहले पेट का पूजा करो और बाद में अपने दोस्त को लेके बाइक के ऊपर जाओ, फीमेल दोस्त का जो भी है, गर्लफ्रेंड वगैरह। पहले पेट भरो और बाद में दिल दिल की बात सुनो। पहले पेट की बात सुनो, पेट पूजा करो और बाद में दिल की पूजा करो। मतलब M2 is for heart, M2 is for heart. So M2 is present in the heart and again CNS. Okay? CNS common है. Now M3, M3 is present in the other organs, है ना, ये याद रखो। बाकी अदर में कौन आएगा फिर, आईज, GIT, ब्लैडर, ब्रोंकस, ग्लैंड्स एंड सीनस। सीनस सब में कॉमन है, तो M1 सीनस में होता है, M2 भी होता है, M3 होता है, M4 होता है, M5 होता है। ये सीनस कॉमन है, सीनस छोड़ दो आप, कोई दिक्कत नहीं, सीनस में सभी रहेगा, M1, M2, M3, M4, M5। M1 में क्या है कि पहले क्या करना है कि पेट पूजा करना है, पहले खाओ, तो कहाँ पे आएगा, गैस्ट्रिक आएगा। खाने से आपको समझ में आएगा, गैस्ट्रिक मतलब स्टमक। दूसरा क्या है, पहले खाओ पेट भर, फिर दिल लगाओ। दिल लगाने के लिए दिल आया मतलब हार्ट आया,
M2 कहाँ पे? दिल में। M3 कहाँ पे? बाकी ऑर्गन। फिर आपने आईज, GIT, ब्लैडर, ब्रोंकस, ग्लैंड्स, और बाकी M1, M2, M3, M4 वो सब कॉमन किसमें है? सीएनएस में। हो गया, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं ना याद रखने। यस और नो? तो ऐसे याद रखना है। तो आउट ऑफ दैट, ओके, रिमेंबर, सो एज आई टोल्ड यू दिस निकोटिनिक रिसेप्टर दे आर आयन चैनल। ये क्या है? आयन चैनल है। आयन चैनल टाइप 1 रिसेप्टर है ना, आयन चैनल। तो मस्केनिक आर नोन एज अ GPCR। ये क्या है? टाइप 2। ये टाइप 2 है। तो मस्केनिक रिसेप्टर्स आर G protein coupled receptor, that is type 2 receptor. Nicotinic receptor are nothing but the ion channel. Yeah, clear? So when we'll see cholinergic drug again after the adrenergic drug, I will explain the same thing again in a short. मतलब अभी तक अच्छे से ये है, बाद में short में लेंगे. Now second is nothing but the adrenergic nervous system. So you know that the neurotransmitter for adrenergic nervous system और sympathetic nervous system. Sympathetic मतलब sympathy. Sympathy कब चाहिए आपको? जब आप डेंजर में होते ना, है ना, डेंजर सिचुएशन में आपके सामने कौन खड़ा है? भूत खड़ा है, भूत। तो आपको लोग आप क्या कर सकते हो? सिंपैथी दे सकते हैं आपको, तो क्या कर सकते हैं? तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, न्यूरो ट्रांसमीटर फॉर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज नॉर एड्रेनालिन। होता है बस नॉर एड्रेनालिन। नाउ हाउ इट इज सिंथेसाइज्ड, how it is told in the neurons, how it is released from scientific vesicles. If you understand this, if you understand how it is noradrenaline synthesized in the neuronal endings, how it is stored in the synaptic vesicle, and how it is released, how it is metabolized. So, if you understand this concept, you are going to understand one class, whole class, drug acting on. Okay? So you will understand the one class. There is no central antihypertensive agent. इसके बेसिस पे सेंट्रल एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट होते हैं, बिकॉज हाइपरटेंशन के लिए ये नॉरएड्रेनालिन रिस्पॉन्सिबल है, जैसे अपन बोलूंगा। Now noradrenaline is a neurotransmitter for adrenergic nervous system and it is synthesized from amino acid. What kind of amino acid? What kind of amino acid? It is synthesized from phenylalanine. What? Phenylalanine is an aromatic amino acid. Or you can say it is also synthesized from tyrosine. Tyrosine से भी बनता है. Okay? But let's do step by step. So phenylalanine. So you know that this is a phenylalanine amino acid. So what happens? There is a hydroxylation of phenylalanine. हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ फिनाइलएलानिन इन द लीवर। हाइड्रोक्सिलेशन मतलब क्या? यहाँ पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड होगा, कहाँ पे? सो फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम विल कन्वर्ट फिनाइलएलानिन इनटू टायरोसिन। टायरोसिन भी क्या है? एक अमीनो एसिड है, टायरोसिन। then again tyrosine will be hydrolyzed by tyrosine hydroxylase and it is converted into dihydroxyphenylalanine, DOP, डोपा मीन्स डाइहाइड्रोक्सीफिनाइलालाइन। देखो यहाँ पे और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया, डाइहाइड्रोक्सीफिनाइलालाइन। ओके, नाउ डोपा इज कन्वर्टेड टू डोपामाइन बाय द एंजाइम डोपा डीकार्बोक्सिलेज। ये डीकार्बोक्सिलेज मुझे मतलब क्या? ये डीकार्बोक्सिलेज मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड रिमूव करेगा। तो ये जो ग्रुप है ना कार्बोक्सिलिक एसिड का, COH ग्रुप, वो रिमूव करने वाला कार्यकर्ता कौन है? ये डीकार्बोक्सिलेज। So dopa decarboxylase will remove this COH group and convert dopa into, this is a dopamine. Okay. Another enzyme dopamine is converted into noradrenaline by the enzyme dopamine beta hydroxylase. Dopamine beta hydroxylase क्या करेगा? जो बीटा कार्बोनेट में उसके ऊपर एक हाइड्रोजन ग्रुप डाल दे। So बीटा हाइड्रोक्सिलेज बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप डाल देगा। कहाँ पे बीटा पोजीशन? ये इसको बोलेंगे अपन अल्फा, इसको बोलेंगे अपन बीटा। It will increase, it will impart a hydrogen group on a beta carbonate. You can see only difference. Dopa is converted to, dopamine is converted to noradrenaline. Now this occurs in the sympathetic neuron और adrenergic neuron, है ना? तो पहले दो स्टेप कहाँ पे होते हैं? इन द साइटोप्लाज्म। पहला स्टेप होता है लीवर में, फिनाइलएलानाइन विल बी कन्वर्टेड टू टायरोसिन। तो बेसिकली ये फिनाइलएलानाइन छोड़ भी दे, आपने याद नहीं रखा तो भी चलेगा, अगर ऑप्शन में नहीं दिया तो फिर फिनाइलएलानाइन आंसर है। सो व्हाट इज द क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द बायोसिंथेटिक प्रिकर्सर अमीनो एसिड?
Biosynthetic precursor amino acid for the synthesis of catecholamines. Catecholamines, catechol मतलब क्या? ये न्यूक्लियस, ये वाला जो न्यूक्लियस है इसको बोलेंगे कैटेकोल. The phenyl ring plus 2 hydroxyl group known as catechol. Okay, and you are having amine function over here. That's why catecholamine. They are known as catecholamines. So dopamine, है ना, phenyl dopamine, then noradrenaline, adrenaline. They are known as catecholamines. Histamine, histamine is not. Okay. So they are known as catecholamines. Adrenaline, noradrenaline, dopamine. They are known as catecholamines because they have catechol nucleus in the structure. नॉरएड्रेनालिन अप टू दिस, ये स्टेप जब होते टायरोसिन का डोपा, डोपा से डोपामाइन एंड डोपामाइन से नॉरएड्रेनालिन, ये कहाँ पे होते? एड्रेनर्जिक न्यूरॉन में होते. कहाँ पे होते? एड्रेनर्जिक न्यूरॉन में. व्हाट इज द रेट लिमिटिंग स्टेप इन द सिंथेसिस ऑफ एड्रेनालिन, और सॉरी व्हाट इज द रेट लिमिटिंग स्टेप इन द सिंथेसिस ऑफ नॉरएड्रेनालिन? इसमें सबसे स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है? इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. व्हाट इज द स्टेप? सो कन्वर्जन ऑफ टायरोसिन, conversion of tyrosine to the dopa, to the dopa. This step is a rate limiting step or slowest step, okay, and irreversible step. Okay. Conversion of tyrosine to dopa, that is the irreversible step. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. Now that these three steps occurs in the adrenergic neuron. Tyrosine to dopa, dopa to dopamine, dopamine to noradrenaline. Now noradrenaline is stored in the synaptic vesicle of the adrenergic neuron. It is released upon signal. It will act on a post-synaptic receptor. It will be metabolized by different enzymes like COMT and catechol orthometal transferase. There is COMT and MAO, monoamine oxidase. Okay, ये दो एंजाइम होते हैं. माओ, माओ मतलब क्या? माओ मतलब बिल्ली वाला माओ नहीं. माओ मतलब ये MAO. So MAO and COMT आएगा बाद में आपको. MAO and COMT. Okay. Now synthesis of noradrenaline from the tyrosine and phenylalanine and tyrosine, so that occurs in the neuron, adrenergic neuron. But from noradrenaline there is synthesis of adrenaline, and that occurs in the adrenal cells, adrenal gland. तो नॉरएड्रेनालिन जो है वहां तक का सिंथेसिस कहाँ पे होता है भाई? वहां तक का सिंथेसिस होता है न्यूरॉन में. मतलब ये सब कार्यक्रम कहाँ पे चल रहा है? यहाँ तक टायरोसिन टू डोपा, डोपा टू डोपामाइन, डोपामाइन टू नॉरएड्रेनालिन, ये सब चल रहा है न्यूरॉन में. देखो इन एड्रेनर्जिक न्यूरोनल साइटोप्लाज्म इनसाइड द ग्रैन्यूल, तो एड्रेनर्जिक न्यूरॉन में हो रहा है. बट कन्वर्जन ऑफ नॉरएड्रेनालिन टू द एड्रेनालिन दैट टेक्स प्लेस इन द एड्रेनल ग्लैंड. जो एड्रेनल ग्लैंड होता है आपका किडनी के ऊपर, वहां पे conversion होता है. Yes. Now it is done by one enzyme not known as noradrenaline N-methyl transferase. ये देखो N-methyl transferase मतलब क्या? N-methyl transferase, N मतलब नाइट्रोजन, मिथाइल ट्रांसफर, तो नाइट्रोजन के ऊपर मिथाइल ट्रांसफर करने वाला एंजाइम नॉरएड्रेनालिन N-methyl transferase. देखो यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर क्या है. So this is known as a how noradrenaline it is synthesized, it is stored and it is released. We'll see अपकमिंग स्लाइड ऑल्सो. तो याद रखना है कि ये जो तीन स्टेप है, टायरोसिन टू डोपा, डोपा टू डोपामाइन एंड डोपामाइन टू नॉरएड्रेनालिन, that occurs in the adrenergic nerve, and irreversible step or rate limiting step is nothing but the conversion of conversion of tyrosine to dopa. That is a irreversible step and rate limiting step. Now noradrenaline is converted to adrenaline by N-methyl transferase enzyme in the adrenal medulla. So that's why adrenaline कहाँ पे पाया जाता है? सिर्फ is only found in the adrenal. Adrenaline is found in the adrenal medulla. It is not found in the it is not found in the neurons. So neurons में रहेगा noradrenaline. Is that clear? Is that clear or not? बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको ये नहीं पढ़ाया होगा इसका गारंटी है मुझे. पढ़ाया आपको? पढ़ाया होगा तो बोलने का भी अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ाया तो, लेकिन पढ़ाना चाहिए. सो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. नॉरएड्रेनालिन, अगेन यू कैन सी ओवर हियर सेम थिंग, नॉरएड्रेनालिन एंड डोपामाइन. So noradrenaline, dopamine क्या है? They are the monoamines or also known as catecholamines. देखो बहुत सारे यहाँ पे
बहुत सारा इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है, मैं बोलता हूँ। मोनोमाइंस और कैटेकोलामाइंस, they are present in the post ganglionic sympathetic nerve endings. Noradrenaline is not noradrenaline is a neurotransmitter for post ganglionic sympathetic sites. कहाँ पे? Mostly all post ganglionic sympathetic nervous system or sympathetic nerve ending you will find noradrenaline, but at some points, for example in the sweat gland you have acetylcholine, in the kidney you have dopamine, where in the mesentery you have dopamine as a post synaptic neurotransmitter, in the sweat gland you have acetylcholine, ये अलग अलग होता है now. So, except sweat gland, hair follicle, dopamine and noradrenaline, okay, they are for basal ganglia and limbic system and CTZ etc. Dopamine क्या है? Dopamine is a neurotransmitter. Dopamine is a neurotransmitter for the basal ganglia, limbic system and CTZ. तो अपन ने देखा है एंटी साइकोटिक ड्रग्स व्हाट दे डू, दे ब्लॉक द डोपामाइन रिसेप्टर इन द लिम्बिक सिस्टम. नाउ दे आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम टायरोसिन अमीनो एसिड. क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुका है. टायरोसिन अमीनो एसिड पूछा दिया, टायरोसिन दिया है तो टायरोसिन लिखा हूँ, नहीं टायरोसिन दिया तो फिनाइल अलानिन, क्योंकि फिनाइल अलानिन इज अ प्रीकर्सर फॉर टायरोसिन. फिनाइल अलानिन से ही टायरोसिन बनता है. कहाँ पे बनता है? लीवर में बनता है. कैसे बनता है? फिनाइल अलानिन हाइड्रोक्सिलेज नाम का एंजाइम. फिनाइल अलानिन इज कन्वर्टेड टू टायरोसिन. तो आपको पूछेंगे बायोसिंथेटिक प्रीकर्सर अमीनो एसिड फॉर नॉरएड्रेनालिन और डोपामाइन और एड्रेनालिन. तो आपको अगर टायरोसिन दिया है उसमें तो टायरोसिन लिखो, नहीं दिया है तो फिनाइल अलानिन लिखो. By the enzyme tyrosine hydroxylase, catecholamines are stored in the synaptic vesicles, that is organelle in the nerve terminal. They are released by the process of exocytosis. इसके ऊपर दो बार क्वेश्चन आ चुका है. There are two types of uptake. अपडेट नहीं, यहाँ पे गलत हुआ है. अपटेक है. There are two types of uptake of this catecholamines known as a vesicular uptake and neuronal uptake. दो टाइप के अपटेक होते हैं. तो rate limiting step of the synthesis of catecholamine is a tyrosine hydroxylase. टायरोसिन जो अमीनो एसिड है उसको हाइड्रोक्सिलेशन होके बनेगा आपका डोपा. टायरोसिन टू डोपा, ओके, टायरोसिन टू डोपा, दैट इज अ रेट लिमिटिंग स्टेप व्हिच इज इनहिबिटेड बाय वन ड्रग नोन एज अ मेटायरोसिन. मेटायरोसिन क्या है? इट इज अ फॉल्स न्यूरोट्रांसमीटर. रेट लिमिटिंग स्टेप इन द सिंथेसिस ऑफ कैटेकोलामाइन्स, दैट इज टायरोसिन टू conversion of tyrosine to dopa. Conversion of tyrosine to dopa. Tyrosine hydroxylase enzyme will convert tyrosine into dihydroxyphenylalanine, that is dopa. रेट लिमिट स्टेप है. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है, रिसेंटली आ चुका है. नाउ डोपामाइन इज मेटाबोलाइज्ड प्रीडोमिनेंटली बाय माओ. माओ बी. डोपामाइन का मेटाबॉलिज्म करने वाला एंजाइम है माओ बी, मोनो अमीनो ऑक्सीडेज. माओ का लॉन्ग फॉर्म होता है मोनो अमीनो ऑक्सीडेज. तो इसके दो टाइप होते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ माओ, माओ ए एंड माओ बी. So MAO B will metabolize dopamine and MAO A will metabolize the other catecholamines like adrenaline, noradrenaline, histamine, okay, serotonin. So that's why MAO B inhibitors they are used in the Parkinsonism, because in the Parkinsonism there is a degeneration of dopaminergic neurons. तो वहाँ पे डोपामिन का डेफिशिएंसी होता है और डोपामिन का डेफिशिएंसी होता है, उसके कारण पार्किंसनिज्म. तो वहाँ पे डोपामिन ज्यादा रिलीज करना है तो आप मेटाबॉलिज्म इंहिबिट करते हो. कैसे? बाय इनहिबिटिंग दिस माओ बी एंड इन द ब्रेन माओ ए. एंड बाकी के जो है एड्रेनालिन और एड्रेनालिन उसको उसको मेटाबॉलाइज करने वाला है माओ ए. एंड सम पार्ट ऑफ दिस कैटेकोलामाइन्स दे आर मेटाबॉलाइज्ड बाय COMT, COMT. इसका लॉन्ग फॉर्म होता है कैटेकोलामाइन ऑर्थोमेथाइल ट्रांसफर. Basically, there are two enzymes which metabolizes the catecholamines. What are they? MAO and COMT. So MAO A principally metabolizes the noradrenaline, adrenaline, serotonin. Okay, उनको मेटाबोलाइज करने वाला है MAO A. MAO B किसको करेगा? MAO B principally metabolizes the dopamine. That's why MAO B inhibitor are useful in the Parkinsonism. MAO A inhibitor are useful in the बोलो. Yes, anybody?
MAO A inhibitors are useful in the which condition? डिप्रेशन एंटी डिप्रेशन देखा है ना अपन ने एंटी डिप्रेशन में देखा है माओ ए इनहिबिटर्स माओ ए इनहिबिशन मींस इंक्रीज द लेवल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स लाइक इंक्रीज लेवल ऑफ कैटेकोलामाइंस बिकॉज डिप्रेशन में क्या होता है कि ब्रेन में कैटेकोलामाइंस कम होते हैं नॉर एड्रेनलिन और यू हाइड्रोक्सीट्रिप्टोमाइन उनका लेवल कम होता है सो टू इंक्रीज दैट लेवल ऑफ कैटेकोलामाइंस you are using MAO A in case of depression so they are antidepressants and MAO B inhibitors are the anti-Parkinson's ये concept clear होना चाहिए आपको now noradrenaline is metabolized mostly by okay, and metabolic product of metabolism are nothing but they are eliminated through urine ठीक है एक क्वेश्चन आ चुका है what is the principal metabolite of noradrenaline remember vanil okay vanillyl mandelic acid vanillyl mandelic acid is the metabolic product of your noradrenaline major metabolite so remember major metabolite of noradrenaline vanillyl mandelic acid then 3-methoxy 4 hydroxy phenyl ethyl glycol 3-methoxy 4 hydroxy phenyl ethyl glycol they are the product of reduction along with that metanephrine is also metabolic product and normetanephrine ये भी क्या है मेटाबॉलिज्म सो नॉर एड्रेनलिन का मेटाबॉलिज्म होने के बाद में क्या मिलेगा आपको वेनिलिल मेंडेलिक एसिड ये क्या है प्रिंसिपल मेटाबोलाइट है सबसे ज्यादा ये मिलेगा उसके बाद में 3 methoxy 4 hydroxy phenyl ethylene glycol ये भी मिलेगा रिडक्शन का प्रोडक्ट अलॉन्ग विद द मेटानेफ्रिन एंड नॉरमेटानेफ्रिन तो ये भी इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा है याद रखना neurotransmitters they are stored in the synaptic they are stored in the synaptic stored neurotransmitters are stored in the synaptic and they are activated they act on their specific receptor their production is regulated by negative feedback mechanism drug now different drugs acting on a ANS so drugs may act by modulating their release ड्रग क्या कर सकते हैं उनका सिंथेसिस कम कर सकते हैं बढ़ा सकते हैं ड्रग क्या कर सकते हैं उसका स्टोरेज कम स्टोरेज स्टोरेज से वहां से स्टोरेज में इंटरफेयर कर सकते हैं ड्रग क्या कर सकते हैं ड्रग उसके मेटाबॉलिज्म में इंटरफेयर कर सकते हैं कुछ ड्रग उसका मेटाबॉलिज्म बढ़ा सकते हैं कुछ ड्रग कम कर सकते हैं these are the drugs how they can act on this system so some drugs they will increase the production some drug will they will inhibit the production some drug will increase the metabolism some will decrease the metabolism some drug will act on a same receptor where these neurohormones will act जैसे एसिटिलकोलिन का रिसेप्टर जैसे बोला था है ना निकोटिनामाइड या निकोटिनिक रिसेप्टर मस्कार्निक रिसेप्टर some drug बहुत सारे ड्रग है they are the muscarinic antagonists some drug they are the agonist to the muscarinic some drug are the nicotinic antagonists some drug are the agonist to the nicotinic receptor तो ड्रग्स वही करेंगे सपोर्ट करेंगे एगोनिस्टिक एंटागोनिस्टिक या फिर इसका सिंथेसिस स्टोरेज मेटाबॉलिज्म इनहिबिट करेंगे now you can see over here this is the structure of noradrenaline okay noradrenaline now it is metabolized by two enzymes first one is a MAO किस कौन मेटाबोलाइज करता है इसको दो एंजाइम पहला एंजाइम कौन सा है MAO noradrenaline is metabolized by MAO and converted into 3,4-dihydroxy mandelic acid okay and after that COMT enzyme will take this 3,4-dihydroxy mandelic acid and convert it into 3-methoxy 4-hydroxy mandelic acid it is known as a vanillyl mandelic acid lastly now this metabolite will be conjugated with the glucuronide and sulfate and then it is removed from your body तो नॉरएड्रेनालिन पहले मेटाबोलाइज कौन करता है माओ बाद में कॉम okay noradrenaline is also metabolized by COMT converted into normetanephrine ये डायरेक्टली conjugate होकर रिमूव होता है so likewise adrenaline so adrenaline is metabolized by MAO converted into
3,4-dihydroxymethylic acid. Then COMT will convert 3,4-dihydroxymethylic acid to the 3-methoxy-4-hydroxymethylic acid, and then it will be conjugated and eliminated. तो समझ में आया मेटाबॉलिज्म इसका? मेटाबॉलिज्म समझ में आया क्या? Actions of drugs on the neurotransmitter. Actions of drugs, various drugs, वो क्या करेंगे ना, क्या करेंगे वो? They will supply or they will act as a precursor. They are supplying amine precursor. For example, levodopa क्या है? It's the precursor of dopamine in the cortisol. Blocking or preventing the reuptake of noradrenaline. Some drugs they will block the reuptake of noradrenaline. Example क्या है उसका? Tricyclic antidepressant like imipramine. So antidepressant क्या करते हैं? नॉरएड्रेनालिन का reuptake जो हो रहा है वो इनहिबिट करते हैं, तो नॉरएड्रेनालिन ज्यादा रहेगा वहाँ पे, डिप्रेशन कम होगा. Some drug act by interfering the synthesis of noradrenaline. For example, alpha methyl tyrosine. Some drugs promote the release of noradrenaline. For example, tyramine. Some drugs interfere with the storage of noradrenaline. For example, reserpine. It is known as a catecholamine depleter. It is an antipsychotic as well as anti-hypertension drug. Some drugs block the release of noradrenaline. For example, guanethidine. Some drugs promote the synthesis of false neurotransmitter. Example is methyldopa. Drugs may act by inhibiting the intraneuronal degradation. There is a metabolism of noradrenaline. MAO inhibitors. So, how drugs can alter these neurotransmitters? If you understand this concept, सभी ड्रग आपको easily याद हो जाएगी. So I hope आपको समझ में आया होगा. Yes or no?